Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students of grade 9, welcome to your biology class. Today the topic which we are going to discuss is related to the cellular structure, and in cellular structure today we are going to discuss cell membrane, which is the outer covering of a cell. And this topic is mentioned in chapter number 4, cells and tissues, on pages 57 and 59 of your textbook. So cell membrane is basically a membranous structure which is present around the cell or cover the cytoplasm. So cell membrane, according to structure we'll talk about, it is thin and elastic in nature. It is thin and elastic, यानी ये पतली होती है और इसमें लचक होती है, यानी अपनी ये शेप चेंज करती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ अ सेल. एंड इलास्टिक होने के साथ साथ ये कहाँ मौजूद होती है, ये एक कवरिंग की शक्ल में, एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर के शक्ल में मौजूद होती है अराउंड द साइटोप्लाज्म. सो इट कवर्स द साइटोप्लाज्म and it is one of the most important feature of eukaryotic as well as prokaryotic cell. यानी सेल मेम्ब्रेन यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में मौजूद होती हैं. Another heading is functions of cell membrane. So the first function of the cell membrane is related to that it acts as a semi-permeable membrane or semi-permeable barrier. Semi-permeable barrier. What is the meaning of this semi-permeable barrier? Semi mean half and permeable mean permission. What is the meaning of this word semi-permeable? के एक रुकावट के तौर पे, बैरियर आप किसको कहते हैं? फेंस को या रुकावट को. फेंस भी इसे कहा जा सकता है, जैसे जानवरों को एक जगह जमा करके उनके गिर्द जो बाड़ या एक पूरा एक नेटवर्क जो है वो लगा दिया जाता है, नेट सा लगा दिया जाता है, उसको हम फेंस कहते हैं. और ये फेंस आपने देखा भी होगा, इस तरह ये बना होता है जो जानवरों को एक चार दीवारी के अंदर रखता है. तो ये आपका फेंस हो गया. क्लियर? सो जिस तरह से ये फेंस होता है, एक बैरियर होता है जो कि महफूज करता है, किसी के अतराफ़ में मौजूद होता है, इसी तरीके से सेल मेम्ब्रेन का काम भी यही है कि ये एक सेमी परमीएबल बैरियर के तौर पे काम करती है. और अगर एक सपोज़ कि ये एक सेल है और इसके अतराफ़ में ये आपको सेल मेम्ब्रेन नज़र आ रही है, बीच में न्यूक्लियस है, अराउंड इट साइटोप्लाज्म आपको अराउंड द न्यूक्लियस मौजूद या नज़र आ रहा है. तो यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है. सेल मेम्ब्रेन बहुत सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको सेल के अंदर ही फेंस कर देती है. जैसे फॉर एग्जांपल ये थोड़े से मैं थिक डॉट्स जो बना रही हूँ, ये मॉलिक्यूल्स हैं. तो ये मॉलिक्यूल्स कहाँ पर हैं? ये साइटोप्लाज्म के अंदर हैं. और सेल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? सेल मेम्ब्रेन जो है वो इन मेजॉरिटी ऑफ केमिकल्स को या मॉलिक्यूल्स को फेंस कर रही है, मजबूर कर रही है कि वो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में रहें, ये बाहर ना आ सकें. और इसी तरीके से अगर कुछ मॉलिक्यूल्स सेल के बाहर हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन क्या करेगी, इन कुछ या फ्यू मॉलिक्यूल्स को कोशिश करेगी कि इनमें से कुछ मॉलिक्यूल जो हैं वो सेल के अंदर आएँ. सारे के सारे मॉलिक्यूल्स को ये अंदर आने की इजाज़त नहीं देगी. एंड इन दिस मैनर, इन दिस वे द सेल मेम्ब्रेन मेंटेन्स द इंटरनल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल. इस तरीके से सेल मेम्ब्रेन का क्या काम है? सेल मेम्ब्रेन सेल के अंदरूनी जो एक इक्विलिब्रियम होता है, एक तवाज़ुन होता है, और इसकी जो इंटरनल कॉम्पोजिशन होती है जिसमें कोई चीज़ बढ़ने नहीं पाती, कोई चीज़ कम नहीं होने पाती, तो इस चीज़ को बरकरार रखने में सेल मेम्ब्रेन बहुत अहम किरदार अंजाम देती है. सो इट एक्ट्स एज अ सेमी परमिएबल बैरियर. नाउ इन द सिमिलर मैनर देयर इज़ अनदर फंक्शन ऑफ द cell membrane that it also acts or perform its vital role in order that it sends chemical messages. Second function, that it can sense chemical messages. ये केमिकल मैसेजेस को बाकायदा महसूस कर सकती है. एंड
can identify other cells and can identify other cells. Now what is this vital role of cell membrane? अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन के बाकायदा तौर पे अगर सेल को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है, किसी भी केमिकल की ज़रूरत होती है, तो बाकायदा इस केमिकल मैसेज को सेल मेम्ब्रेन सेंस करती है, महसूस करती है और बाकायदा उन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आने की इजाज़त देती है। ना सिर्फ ये बल्कि अगर किसी दूसरे सेल्स को भी इन केमिकल्स की ज़रूरत हो तो एक सेल से दूसरे सेल में जो सेल मेम्ब्रेन का एक कनेक्शन होता है वहाँ तक भी इन केमिकल्स को आना और जाना, या एक तरह से ट्रांसपोर्ट का जो एक अमल है एक सेल से दूसरे सेल्स में, वो भी सेल मेम्ब्रेन ही अंजाम देती है। तो एक बहुत ही एडिशनल रोल, एक वाइटल रोल जो कि सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म करती है, दैट इट कैन ऑल्सो सेंस द केमिकल मैसेजेस एंड कैन आइडेंटिफाई अदर cells. So these are two main function of cell membrane. Another heading of cell membrane is chemical composition of cell membrane. Chemical analysis reveals that cell membrane is mainly composed of three important chemicals, in which the first chemical is protein, then lipids is also present in cell membrane. Along with proteins and lipids, a small amount of carbohydrates and very small amount of cholesterol, a minute amount of cholesterol is also present in the structure of cell membrane as different chemicals. So chemical composition mean कि cell membrane कौन से chemical से मिलकर बनी है. So these are some of the chemicals which are present in cell membrane. Now electronic microscopic examination led to the discovery or development of chemical composition of cell membrane in the form of a model which is called fluid mosaic model. What is the model of cell membrane called, or structure of cell membrane called? Fluid mosaic model of cell membrane. So according to this model, there is a lipid bilayer in which the protein molecules are embedded. So most important thing that in the structure of cell membrane, lipids are present in the form of bilayer, that is in two layers, and the protein molecules are embedded in them, धसे हुए होते हैं, यानी दो लिपिड की लेयर्स होती हैं जिनके अंदर प्रोटीन के मॉलिक्यूल धसे हुए यानी इस तरीके से अटैच होते हैं कि बाकायदा एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का काम वो अंजाम देती हैं. एंड देन वी कैन ऑल्सो से दैट दिस लिपिड बायलेयर परफॉर्म्स very important function in cell membrane, that it gives the fluidity and elasticity to the cell membrane. इस लिपिड बायलेयर का सेल मेम्ब्रेन में होना इसलिए भी ज़रूरी है कि ये दो अहम चीज़ें जो है वो सेल मेम्ब्रेन को प्रोवाइड करती है. एक तो फ्लूइडिटी यानी एक नमी पहुंचती है सेल मेम्ब्रेन को, और साथ साथ सेल मेम्ब्रेन की जो इलास्टिक नेचर है वो इसी लिपिड बायलेयर की वजह से होती है, जिसकी वजह से इसमें लचक पैदा होती है और ये अकॉर्डिंग टू नीड अपनी शेप चेंज कर सकती है. अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन इट. जैसे कि हम यहाँ पर बता भी चुके हैं, along with the lipid bilayer and proteins, carbohydrate in small amount are also present or found in the cell membrane, and these carbohydrates are joined with proteins or lipids of membrane in the form of glycolipids and glycoproteins. For example, if the carbohydrate is attached with protein in the cell membrane, then it will be called glycoprotein. And if carbohydrate is attached with lipids, then the simple combination it will be glycolipid. So carbohydrate in a small amount also present found in the cell membrane,
and it is attached with, or these chemicals are attached with the protein and lipids in the form of glycoprotein and glycolipids. In eukaryotic cells, not in prokaryotic cell, very small amount of another type of lipid also present, and this type of lipid is called cholesterol. What is the name of this lipid? Cholesterol. ये भी एक चिकनाई की एक शक्ल होती है, ये भी फैट की एक शक्ल होती है. So cholesterol is also present in lipid bilayer. And most important thing which we are going to describe here, that in eukaryotic cells many organelles such as mitochondria, in the similar manner Golgi apparatus, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, I'm writing here ER, endoplasmic reticulum. These are some of the organelles, along with the chloroplast, even you can write chloroplast. These are surrounded by or bounded by cell membrane. For example, if I'll draw here the mitochondria, then what will be the, or which will be the outer membrane of the mitochondria in this case? So this outer membrane of mitochondria is called cell membrane. This figure shows the fluid mosaic model of cell membrane. So here I am writing what is the name of this model. It is the fluid mosaic model of cell membrane. So according to this model, there is a lipid bilayer. So what are these two layers? One and second one. These two layers are called lipid bilayer, because meaning of bilayer mean two layers. So the lipids are present inside the cell membrane in two layers. And protein molecules, here you can see protein molecules are embedded in these two layers of lipids. This lipid bilayer provides fluidity and elasticity to the membrane. Small amount of carbohydrate, where you can see the carbohydrate, here you can see the carbohydrate. So a small amount of carbohydrate are also present in cell membrane, and these are present along with proteins and as well as lipids. If they are present along with proteins or attached with protein, they are called glycoprotein, and if they are attached with lipid, they are called glycolipids. So finally we can say that carbohydrates are also present inside the cell membrane or in the cell membrane, and they are attached with protein and lipids. Another thing which you can observe here is cholesterol. So small amount of cholesterol is also present in eukaryotic cells. And in eukaryotic cells, many organelles such as mitochondria, chloroplast, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum, they are also bounded by this cell membrane. So this is the complete structure of or fluid mosaic model of cell membrane. Now sometimes we get confused to differentiate between plasma membrane and cell membranes. So here you can see the difference between plasma membrane and cell membrane. Plasma membranes are the outer membranes of the cell, while the cell membrane are the all membranes of cell. All the membranes of the cell are called cell membrane. For example, in case of plant cell, you can observe that the outer wall of a plant cell is called cell wall. So this is the outer wall. This is outer wall. An outer wall is called cell wall, but we are not concerned here with the cell wall. We are making plasma membrane. We are discussing plasma membrane. So there is a thin membrane inside the cell wall in plant cell, and this thin wall is called
plasma membrane. So it is basically the outer membrane of the cell. It is present outside, that is outside the cytoplasm and nucleus and vacuole and different other organelles. So it is a plasma membrane. Plasma membrane. Now in case of cell membrane, here I am making animal cell. So around the animal cell, outer covering is called cell membrane. So it is not only the outer covering, outer membrane of the cell, but also we can find cell membrane around some of the organelles which are present mainly in eukaryotic cells, like nucleus. Nucleus is one of the most prominent and important organelle in the eukaryotic cell. As you can see, there are two double membranes present around the nucleus, which are called nuclear membranes. So these two nuclear membranes around the nucleus are actually called cell membranes. So cell membrane is not necessary that it is mainly the outer covering of any cell. It can be all membrane of the cell, all the membranes which can be present around organelles as well. So nucleus is an organelle in which you can clearly see that cell membrane is the outer covering of the nucleus as well. There are some other organelles inside this cell, and these organelles are called endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum. And endoplasmic reticulum also contains double membrane bounded organelle. As you can see, it is a double membrane bounded organelle and contains double membrane in the form of cell membrane. One more organelle, that is called the Golgi bodies or Golgi apparatus. So here I am making the Golgi apparatus. So Golgi bodies or Golgi apparatus are also containing double membrane bounded cell membrane or double membrane structure around them. In a similar manner, in plant cell we have special organelle for making food for the plant cells, and this special organelle is called chloroplast. Chloroplasts are also surrounded by cell membrane. So what does this whole thing indicate? That cell membrane are the membranes of a cell, all the membranes of a cell, not necessary that is the outer covering, but also the outer covering of the organelles as well. While the plasma membrane is only present as an outer covering or outer membrane of the cell.